So hello guys, welcome back to my channel EDULON Education. Today we are going to do geography chapter number 1, India size and location. As we all know that this geography textbook is completely based upon our India. So chapter 1 states its size and location. Moving on, let's study it out. These all are the topics today we are gonna study. So, in the world map, if we see this is the world map, then this is the location of our India. I hope you all can get a see it. This is the location of our precious India, right? So India is a vast country. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है. ये नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये कहाँ लाई करती है? नदर्न हेमिस्फेयर. It lies in northern hemisphere, right? The mainland extends between the latitudes and longitudes. Latitudes हमारे ऐसे दिखते हैं. These are the horizontal lines. Latitudes में एक वर्ड आता है लेटी. लाटी 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 से एक वर्ड निकल के आता है लेटी हुई. तो लेटी हुई जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. और लॉन्गिट्यूड्स में एक वर्ड आता है लॉन्ग, यानी वो इमेजिनरी लाइन which runs in vertical imaginary lines on the globe is completely known as longitudes. So 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, these two are really important data based. ये आते हैं MCQs में. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divides the country into almost two equal parts. ये अगर हमारा इंडिया है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है वो हमारे इंडिया के दो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यानी पॉइंट्स में समथिंग समथिंग पॉइंट्स के अंदर हमारे इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, हमारे साउथ ईस्ट और हमारे साउथ वेस्ट में अंडमान है एंड लक्षद्वीप इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबिया. अब इसके लिए ना एक बहुत इजी सी ट्रिक बताते हैं. मेरे को पता है अंडमान इज इन बे ऑफ बंगाल. अंडमान, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, अरेबियन सी. अब ए कभी आपस में नहीं जुड़ सकते. हमें चारों के नाम याद रहते, बस ये नहीं याद रहता कि कौन सा किसके अंदर है. तो ए और ए कभी साथ नहीं आएंगे. ओके, अंडमान लाइज इन लक्षद्वीप एंड are Andaman lies in Bay of Bengal and the Lakshadweep lies in Arabian Sea. The southernmost point of the India Union, Indira Point, got submerged under the seawater in 2004 during the tsunami. There's one almost every time in each and every exam. Whenever this chapter is coming, this question is asked: which year or which point got submerged under the sea water? Okay, these are all we can say these are all the neighboring countries: Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, China, Pakistan, and Afghanistan. So you all need to learn all these countries. India size. India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.5% of the total geographical area of the world. यानी मान लीजिए वर्ल्ड का 100% एरिया है तो उसमें से 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया के पास है. इंडिया का लैंड मास क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 3.28 million square kilometer. India is the seventh largest country. India has a land boundary of about 15,200 kilometers. The total length of the coastline of the mainland, including this and this, is this. नहीं कहना चाह रहे हैं
दैट अगर हम सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें पूरी कोस्ट लाइन के साथ की बात करें, यानी यहाँ यहाँ वाली की भी बात करेंगे, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। हम सिर्फ यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं, ओनली द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड। हमारा पूरा इंडिया, लाइक सी नाउ, this is our complete India. No, not this, not this, no, 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 no. Completely not. I took some other countries which don't deserve to be here. Sorry for that. This is our India. Alright. The thing which I'm drawing right now is what our India. This is the mainland. What is this? The mainland. But if I talk only about the coastline of our nation, coastline, then it is this much. Coastline. Acknowledge this is the coastline. Okay. This is the coastline. Alright. Moving on, we have India is situated on the northern hemisphere above the equator between 8 degree 4 minutes north. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर. India is bounded by young cold mountains, the Himalayas in northwest, north and the northeast. What does it mean that अगर ये हमारा इंडिया है, पिछले वाले मैप में चलते हैं, ये हमारा इंडिया है तो ये नॉर्थ में, and what else was there? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी इधर सारी जो भी हमारा जगह है, दिस इज ऑल बाउंडेड बाय आर हिमालयास. दिस इज ऑल टेकन ओवर बाय द हिमालयास. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रफली डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू इक्वल हाफ्स. रफली यानी अंदाजे से, वी आर सेइंग इट अंदाजे से. इसने हमें हमारी जो इंडिया है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. देन इज इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the extent east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. हमें लगता है कि जो ईस्ट वेस्ट है, यानी दिस टू दिस, ये वाला पार्ट टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ. नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से हमें ये छोटा लगता है. कौन सा वाला पार्ट? हमारा साउथ वाला. देखें, खुद ही देखेंगे इसको बड़ी गौर से कि आपको छोटा कौन सा लग रहा है. ओके, one is this extent and the another one is this extent. कौन सा छोटा लग रहा है? Obviously this one, right? ये छोटा लग रहा है हमको, जबकि देखेंगे हम आगे कौन सा बड़ा होता है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करता है? सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लेटिट्यूडनल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अब ये बात हमेशा याद रखना, इंडिया का जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारे डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है, और जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सनराइज एंड सनसेट को इफेक्ट करता है. बोल रहे हैं लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इट्स अबाउट 30 डिग्री. इसीलिए गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. अब जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 घंटे का फर्क है, तो पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करा गया. The time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minutes, is passing through Mirzapur in UP.
somewhere here, okay? Mirzapur in UP is taken as standard time. अब देखिए कौन सा वाला बड़ा है, यही वाला बड़ा है. This is 2933 kilometers. East to west extent is 2933 kilometers, and north to south extent is 3214 kilometers. Moving on, the Indian landmass has central location between the East and the West Asia, southward extension of the Asian continent. Now let's talk about the strategical central location in India, yani how it has benefited, how it is benefiting us, what is the strategic control and all. The trade Indian Ocean routes which connects the country of Europe and West and the countries of East Asia. It is like the 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 sea, you know, India is a peninsula country, means it is surrounded by water from three sides. It's surrounded from water from three sides. So the routes they help us a lot. The Deccan Peninsula protrudes in the Indian Ocean, thus helping West Asia. हमारे इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है विच इज अराउंड 7 lakh kilometers. 7 lakh kilometers. Therefore, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. यानी ओशियन की नेमिंग इंडिया के नेम पर हुई थी. Now, Indian roots, India's contact with the world, India's relationship with the world, to the land routes, are much of maritime contents. यानी सी से हमारे contents recent है लेकिन land से they are very old. You know, everything like philosopher, Greek structure की dome buildings, these all they came from the Silk Route. You know, Silk Route. The silk came from here, spices came from there, right? Upanishads and Ramayana stories, Panchtantra, decimal system. This all were exchanged through these roads only. That's why land routes they're much older than the maritime contexts. They're much older than maritime. The various passes across the mountains in the north have provided message to the ancient travelers such interaction for a long time. These routes have contributed to the exchange of ideas and commodities. अब हम ancient connection के पढ़ते हैं. Upanishads, Ramayana, stories of Panchatantra, the Indian numerals, and decimal system thus could reach many parts of the world. अब हमारा ancient route कौन सा था? Yeah, ancient route कौन सा था हमारा? It was none else but the roots, right? It was the roads. Now, through roads only, everything traveled, right? Other mechanized were taken from India to different Greek sculpture and acting in different parts of our country. ये सारा they are signifying that our land routes they are much older than the maritime context. See Ramayana, spices, sculptures. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. अभी एशिया है और ये है मेरा सुएज कैनल. क्या है? सुएज कैनल. इस सुएज कैनल की वजह से ही इंडिया को इंडिया का कम पेट्रोल लगा. क्यों? क्योंकि उसने 7,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर दिया. अब इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. इंडिया in South Asia has 28 states and 8 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal, and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. This is what we have read earlier as well, and we are learning it out in each and every book of general knowledge. Our southern neighbors across the sea consist of two countries. Southern neighbors की बात करें तो Sri Lanka और Maldives. Maldives is not a part of India. It is its neighbor. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea
formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep. India has strong geographical and historical links with the neighbors. So now this is what we have to read at last. इंडिया की लोकेशन की बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में latitude 8 degree 4 minutes north to and 37 degree 6 minutes north in latitudes, and longitudes की बात करें 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. लैंड मास साइज की बात करते हैं तो एरिया 3.28 million square kilometers, land boundary 15,200 kilometers, length of coastline 7516.6 kilometers. Standard meridian passes through Mirzapur of Uttar Pradesh, that is 82 degree 30 minutes north. Then talking about its neighbors, Pakistan, Afghanistan, China, Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, these all are what? India's neighbor. India and the world. Our land routes are much older than maritime context. India holds a significant place in Asia, and it's geographically and strategically a strong country, a very strong country. So, from this, we conclude our chapter that this chapter helped us realize the true significance of India in the world, the true importance and the true strength of India geographically, historically, and strategically. This chapter also helped us deal with the neighbors of India: Afghanistan, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maldives is somewhere like here. Okay, this helped us realize the true strength of India. India is not just a landmass, India is all about power. India has power, and India will reach on the top of the countries like Japan one day. So, bye bye for now. Meet you in next video. Please like and subscribe.